Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Yes, so what we are going to do today? Today the video is biological classification, that is lecture number 7. We have successfully done lecture 6 tak, right? Now we are doing lecture 7th. Okay, so and the topic is, as you know, fungi. देखिए, steps in sexual reproduction ये हम पढ़ने जा रहे हैं, but before this I would like to give a picturized view so that it would be easy for you people to get the things easily. देखिए, now let's just start a session of the day. What you can see, what is mycelium? I would like to ask one question. What is mycelium? In the lectures जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आप जानते हो what is mycelium? Yes, group of hyphae is mycelium, right? देखिए, अगर mycelium is haploid and here the mycelium is haploid, the two myceliums through mitosis, right, it will form gamete. Now, so it will form gamete. Yes or no? Yes or no? Please, I want one thing. Okay, first मैं आप लोगों को डेफिनेशंस करा दूंगी, देन वी विल गो टू दैट पार्ट, सो दैट आप लोगों को ऐसे भी इजीली हो सकता, वैसे आई एम सो कंफ्यूज. पहले मैं चाहती हूँ कि हम ये डेफिनेशन वाइज चले जाएं. देखिए, प्लास्मोगेमी, प्लास्मोगेमी राइट, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, गैमीट्स के दो गैमीट्स के फ्यूजन को हम बोलेंगे प्लास्मोगेमी, इन विच वहाँ पर क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूजन तो है लेकिन in which protoplasm fuse होगा, right? In which protoplasm fuse. देखिए, fusion of two gametes in which protoplasm fuse, डाइकैरियन फॉर्म होगा. तो प्लास्मोगेमी का रिजल्ट क्या है? दैट इज डाइकैरियन, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इन विच गैमीट्स में भी क्या फ्यूज हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, एंड इट इज रिजल्टिंग डाइकैरियन. So dikaryon is a result of plasmogamy. So you can expect direct question like this, that dikaryon is the process of plasmogamy. Yes, plasmogamy क्या है? It is process, right? And dikaryon is a result of plasmogamy. So देखिए, what is plasmogamy? Fusion of two gametes in which protoplasm का fusion दिखेगा आपको. Dikaryon is the result and the process is plasmogamy. ठीक है. Now let's see the picture. See what we have read कि fusion of two gametes, right? Fusion of two gametes in which what is fusing? Protoplasm, in which protoplasm is fusing, right? But fusion of two gametes is plasmogamy. What this process is? Yes, fusion of two gametes is, yes, plasmogamy, right? Yes, plasmogamy. Very good. So fusion of two gametes is plasmogamy in which protoplasm fuses, right? See, fusion of two gametes, it is plasmogamy, yes. And what is the result? The result is what? Yes, dikaryon is a result of plasmogamy. Have you people got it? क्या हम डेफिनेशन कवर करके आने के बाद आपको अच्छे से समझ आ चुका? देखिए, ग्रुप ऑफ हाइफे इज माइसीलियम. नाउ माइसीलियम थ्रू माइटोसिस इट इज फॉर्मिंग गैमीट, राइट? देन गैमीट, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज plasmogamy in which protoplasm fuse, but the result is what? Dikaryon is the result. आपको यहाँ पर dikaryotic condition दिख रही, right? So it is dikaryon. This is the result of which process? It is, right, plasmogamy. यहाँ पर देखिए, ये flow chart it is based on some other topic, but I have taken it as an example. यहाँ पर देखिए, in phycomycetes you cannot see this dikaryon not visible in phycomycetes. हम ये आगे पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये mention किया है. Don't look up to this. Meanwhile हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फाइकोमाइसिटीज में हमें डाइकैरियन, दैट इज डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं मिलेगी, राइट? So what is the result of plasmogamy? Dikaryon is a result of plasmogamy. Now see, let's see the next process in sexual reproduction. We have completed plasmogamy, right? Fusion of two gametes in which protoplasm fuse and dikaryon form. So dikaryon is a result of plasmogamy. Yes, plasmogamy, it is a process and dikaryon is a result. Now we have successfully seen that in the picture, in a picturized manner as well, right? See, karyogamy, right? Karyogamy, everyone knows that what it is. Yes, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज होगा. जो हमें अभी डाइकैरियोटिक कंडीशन मिला था, दैट इज 2 न्यूक्लियस मिले थे हमें, दिस वाज डाइकैरियन, राइट? नाउ इन कैरियोगेमी ये जो भी 2 न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म
zygote. What will it form? It will form zygote, right? It will form zygote with one nucleus. So this is what, right? देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था plasmogamy. What is the result? This is dikaryon with two nucleus is the result of plasmogamy. In karyogamy, these two nucleus will fuse. They will fuse and form zygote, right? See, in karyogamy, nucleus fuse होगा and it results in zygote. ये zygote form होगा. Let's see in here also. देखिए यहाँ पर ये था प्लास्मोगेमी, गैमीट्स वर फ्यूजिंग एंड द रिजल्ट वाज डाइकैरियन एंड हमें डाइकैरियन नहीं मिलेगा फाइकोमाइसिटीज में. दिस इज मेंशन्ड हियर एंड नाउ सी हियर इट इज कैरियोगेमी. दिस प्रोसेस which process? Yes, what? Yes, fusion of two nucleus, that is this process is karyogamy. यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? Karyogamy. Yes, very good. This is karyogamy. This process is karyogamy. Okay, this is karyogamy and the result is what? Zygote is a result of karyogamy. Yes, zygote is a result of karyogamy with one nucleus. यहाँ पर आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे थे, यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है, वो प्रोसेस को हम karyogamy बोलेंगे एंड karyogamy का रिजल्ट है zygote, राइट? zygote है karyogamy का प्रोसेस एंड dikaryon है plasmogamy का प्रोसेस. Okay, with this we have completed the two steps in sexual reproduction. Now our last step is here. See, meiosis. देखिए zygote undergoes meiosis to form spores. What is ultimate thing that we get? That is spores, right? But what we have got in the previous sexual reproduction वाला process, that is karyogamy, we have got zygote as a result, but we ultimately get spores, right? देखिए मियोसिस इन zygote, जब मियोसिस होगी zygote में रिडक्शन डिवीजन होगा, उससे हमें मिलेंगे स्पोर्स. ठीक है, देखिए यहाँ पर वी सी हियर वंस, सी यहाँ पर माइसीलियम दैट इज group of hyphae, then through mitosis they are forming gametes, then gametes they are fusing through plasmogamy to form dikaryon and dikaryon is a result of plasmogamy and plasmogamy, that is dikaryon, is not visible in phycomycetes. Then these two nucleus are fusing by the process karyogamy to form zygote. Now zygote undergoing reduction division, that is meiosis, to form spores, right? Now zygote क्या होगा? undergo करेगा reduction division, that is meiosis, to form spores. Then spores will again germinate to form mycelium. Spore will form hyphae will form mycelium. See, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या यहाँ पर है. देखिए what is the fate? zygote के बाद meiosis होकर spore form होगा, then it will again form mycelium. Otherwise यहाँ पर mitosis होके sometimes it will form fruiting body also. mitosis होगी and it will form fruiting body. Then fruiting body की meiosis, हमें spores तो चाहिए ही, but कभी कभी क्या होगा, sometimes you will see here mitosis will occur and it will form fruiting body. zygote की अगर mitosis करोगे it will form fruiting body, right? Then fruiting body की आप meiosis करोगे then it will form spore. Then again spore will form mycelium. So it was it is actually a different case जो हम आगे पढ़ेंगे. But what is actually the main thing, that the concept that we have to take here is zygote में meiosis होगी and it will form spore. देखिए two hyphae, sometimes mycelium will fuse to form gamete and the dikaryon and zygote, then meiosis, spore, then again germination. Sometimes we can see hyphae also, hyphae of compatible type come and fuse. ये वाला टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, जब आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ोगे आप लोग को आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए समटाइम माइसीलियम एंड इन सम केसेस वी कैन सी हाइफे एज वेल. यहाँ पर हाइफे फ्यूज होंगे एंड दे फॉर्म डाइकैरियोटिक हाइफे, राइट? सो ये था, ये आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए आई हैव एक्सप्लेन यू दिस वाला पार्ट एंड दिस वाला पार्ट. बट द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट mycelium, that is group of hyphae, right? It will form gametes through mitosis. Then these gametes through plasmogamy they form the result of plasmogamy, that is dikaryon, and dikaryon is not visible in phycomycetes, right? Now these two nucleus they fuse together by the process of karyogamy to form zygote. Now zygote will go meiosis, that is undergo reduction division to form spores. Spores will germinate again to form mycelium. This is the process and steps in sexual reproduction that we have gone through in these slides as well. See, now which of the following process, now the question is here, which of the following process results in dikaryon? What is the result? In which process dikaryon is result? This is the question, right? कौन से process में आपको result था dikaryon? Please, in the 3 seconds you should answer this question. That is 1, 2, 3 and the go. Yes, what? Plasmogamy. Plasmogamy में हमें result क्या था? Dikaryon. And in karyogamy what was the result? Zygote was the result. In meiosis spores we have seen, right? Okay, now
अब हम पढ़ने जाएंगे, वी हैव phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes as classes, right? Now we will see each classes in a more detailed manner, but before going to that, what I would like to recommend you people is कि आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें. मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स परफेक्ट कराकर ही आगे ले जाना चाहती हूँ, सो दैट जो हम क्वेश्चन करें वो एग्जाम्पल बेस्ड ही आएगा. देखिए, phycomycetes, please, if I'm saying phycomycetes, write phycomycetes in your notes right now and write the examples as I'm repeating. जल्दी जल्दी आप लोग क्या करें, 3 टाइम्स लिखते जाइए. मैं भी आप लोग अच्छे से आराम से पढ़ाऊंगी. 3 टाइम्स आप लोग करें. देन फर्स्ट phycomycetes, राइट. देन मैं आप लोगों को 3 टाइम्स पढ़ाऊंगी. आप लोग 3 टाइम्स उसको लिखोगे. देन आप लोग म्यूट करोगे. देन उसको 3 टाइम्स अच्छे से याद करोगे. देन आप वीडियो को फिर से प्ले करोगे. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस दैट यू शुड फॉलो. नाउ लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल्स. सी, phycomycetes में एग्जाम्पल्स है म्यूकर, rhizopus and albugo. What are the examples in phycomycetes? That is the first group in fungi, that is म्यूकर, rhizopus and albugo. In phycomycetes, what are the examples? म्यूकर, rhizopus and albugo. Now आप लोग जल्दी से म्यूट करोगे. 3 टाइम्स अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है, आप लोग 3 टाइम्स नोट करोगे phycomycetes एंड सेम लाइक दिस. एंड 3 टाइम्स नोट करने के बाद 3 टाइम्स आप लोग याद करोगे. देन आप लोग वीडियो प्ले कर कर ascomycetes पर आओगे. श्योर? ओके. नाउ ascomycetes. सी, aspergillus, penicillium, yeast, claviceps, morels, truffles and neurospora. So in ascomycetes, aspergillus, penicillium, yeast, claviceps, morels, truffles, neurospora. Ascomycetes, that is aspergillus, penicillium, yeast, claviceps, morels, truffles, neurospora. Write 3 times and read 3 times. And here we go in basidiomycetes. Okay, see, here we are in basidiomycetes. See, Puccinia, agaricus, puffball, stylago and toadstool. What is the example of basidiomycetes? Puccinia, puffball, agaricus, stylago, toadstool. Basidiomycetes, Puccinia, puffball, agaricus, stylago, toadstool. Right? Have you done 3 times? नोट्स में आप लोग लिख चुके हो रफली. 3 टाइम्स रीड कर चुका है आपने. देन यू विल गो विद deuteromycetes. सी, deuteromycetes, Alternaria, Coletotrichum, Trichoderma. Deuteromycetes, Alternaria, Coletotrichum, Trichoderma. Deuteromycetes, Alternaria, Coletotrichum, Trichoderma. So have you people done with asco, basidio, deutero and phyco? Yes or no? 3 times writing वाला part, 3 times reading वाला part, each and every fungi वाला group. Have you people done? अगर आप लोग डन कर रहे हो देन ही आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए सरप्राइज है. सी, हियर आर द ट्रिक्स. फर्स्ट मैं आप लोगों को परफेक्ट कराना चाहती थी एग्जाम्पल्स में, क्योंकि आप परफेक्ट हो गए जब भी आपको ट्रिक दिखेगी, राइट? अगर आप नेम ही परफेक्टली आपको आता नहीं है, यू डोंट नो प्रोनाउंसिएशन, यू डोंट नो इन विच ग्रुप दे बिलोंग, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू पीपल इवन टू analyze the tricks and to apply the tricks. So here are the tricks. See, in phycomycetes you can remember mar, M-A-R, mar. In phycomycetes, that is mucor, A for agaricus, R for rhizopus. Mar, right? M-A-R, that is mucor, agaricus, rhizopus, right? M-A-R, mar for phycomycetes. This is the trick. First, अगर आप mucor, agaricus, rhizopus आपको पता है कि वो phyco में है, then only trick will work, right? M-A-R, and then you will get to know that it is mucor, it is agaricus, and it is rhizopus. इसीलिए first go with the examples clearly, then come for the trick. Then now here ascomycetes, penicillium, aspergillus, yeast, morels, truffles,
morels, neurospora, truffles and claviceps. क्या आप लोग कर चुके हैं वो? आप लोग कर चुके हो वो एग्जाम्पल्स? जल्दी बताएं. देखिए अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगी. यहाँ पर जैसे हम मार कर चुके थे, यहाँ पर देखिए पे, दैट इज पे, पेनिसिलियम एगैरिकस, सॉरी पेनिसिलियम एस्परजिलस एंड ईस्ट. ये जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पर एगैरिकस कर बताई, इसीलिए बताई क्योंकि आप लोग इसे कंफ्यूज हो जाओगे. अगर आपको पता नहीं है एगैरिकस बिलोंग्स टू फाइकोमाइसीटीज, देन आप एस्को में भी उसको इंक्लूड कर दोगे. इसीलिए फर्स्ट गो विद एग्जाम्पल्स, देन कम फॉर द ट्रिक. इट विल वर्क 100%. इट विल वर्क इफ यू आर गुड विद एग्जाम्पल्स. देखिए पे मिनिमम टीसी. इफ यू गो टू if you are going to get admission in intermediate, then minimum you have to pay TC there of 10th standard. And अगर आप डिग्री करने जा रहे हो, then you have to pay the TC of minimum intermediate there. That is must for each and every person. Without TC you cannot do that. And हमें बचपन से पता है अगर हम कुछ गलत करते हैं, then हमें क्या बोलकर डराया जाता है स्कूल में, that principal will give TC, right? Headmaster will give TC. So pay minimum MN TC, right? Pay minimum TC. देखिए पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ईस्ट, मोरल्स, न्यूरोस्पोरा, ट्रफल, क्लाविसेप्स. पे मिनिमम TC. पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ईस्ट, मोरल्स, न्यूरोस्पोरा, ट्रफल, claviceps. Pay minimum TC. Penicillium, aspergillus, yeast, morels, neurospora, truffles, claviceps. So have you done with the tricks of FICO and ASCO? MAR and pay minimum TC, right? We have done MAR, pay minimum TC. MAR, pay minimum TC. So this was for FICO and ASCO. Now let's just get over to the next group, that is Basidio and Deutero. Everyone know आजकल के हर every individual, whether it's kid, whether it's adult, everyone know selfie, right? Selfie and the word pout. This is the most famous thing everyone know, right? Please. Yes, pout. You have listened it clear. Pout. That is puffball, Puccinia, Agaricus, Estilago and toadstool. Pout, puffball, Puccinia, Agaricus, Estilago and toadstool. Pout, puffball, Puccinia, Agaricus, Estilago and toadstool. Right. Then in Deuteromycetes, it's very simple, right? Cat, that is Coledotrichum, Alternaria and Trichoderma. Cat, that is Deutero, Coledotrichum, Alternaria and Trichoderma. Cat, that is Coledotrichum, Alternaria and Trichoderma. So in Basidiomycetes, that is pout. In Deuteromycetes, it is cat, right? So we will just see all the tricks in one go, and let's move on to the other topics. That is MAR for Phycomycetes. Ascomycetes, pay minimum TC. Then here comes is Basidiomycetes, right? Pout. Then in Deuteromycetes, it is cat. So have you people done with these tricks? Please. Now let's just head on to our next topic, that is here. It is the note. In Phycomycetes, that is first group, dikaryon stage is not visible. जैसे कि मैंने आपको बताया था वो डायग्राम में, that is dikaryon stage is not visible. Dikaryon stage first आप बताएं मुझे क्या है? It is result of plasmogamy and एक इस condition है जहाँ पर it will the cell will have two kind, nucleus of two kind, right? It will have two nucleus. Wait a second. Okay. So first you say me, what is dikaryon? It is result of the process, that is प्लास्मोगेमी, राइट? प्लास्मोगेमी का रिजल्ट है डाइकैरियन स्टेज. एंड आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? प्लास्मोगेमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी. अगर हमें कैरियोगेमी हो जाए, यहाँ पर प्लास्मोगेमी है, देन इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शंस आपको अगर कैरियोगेमी भी हो जाए, देन इट विल फॉर्म जाइगोट, राइट? यहाँ पर आपको क्या डाइकैरियन स्टेज दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट? दैट इज व्हाट they are saying. That is the reason in Phycomycetes dikaryon stage is not visible, क्योंकि यहाँ पर प्लास्मोगेमी के बाद immediately कैरियोगेमी फॉलो हो जाती है and zygote will form. ठीक है.
बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज डाइकैरियन स्टेज विजिबल होगा, राइट। दैट इज प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के बीच में हमें मिलेगा डाइकैरियन। प्लाज्मोगेमी इज रिजल्ट डाइकैरियन। डाइकैरियन में जो यहाँ पर न्यूक्लियस है तो फ्यूज हो गए कैरियोगेमी एंड इट विल फॉर्म जाइगोट। दैट इज बिटवीन plasmogamy and karyogymy we will see dikaryon stage in both basidio and asco. In deuteromycetes no sexual reproduction, ये sexual reproduction के steps है, right, that is plasmogamy, karyogamy, meiosis, but यहाँ पर in deuteromycetes sexual reproduction ही नहीं दिखेगा हमें deuteromycetes में, ठीक है। So in phycomycetes dikaryon stage not visible, in basidio and ascomycetes dikaryon stage visible है। देन ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स कहाँ से मिलेंगे आपको सर, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू नोट। नाउ एनसीईआरटी वाला पार्ट, लेट्स जस्ट गेट टू इट। देखिए, रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स लाइक फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, वी हैव सीन दिस, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, called conidia or sporangiospores or zoospores, and sexual reproduction by oospore, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies, right? Fruiting bodies में spores form होंगे। The sexual cycle, देखिए sexual cycle involves the following three steps। आपको यहाँ पर asexual लेके भी confuse कर सकता है, so please here please note here sexual cycle, fusion of protoplasm between two motile भी रह सकते हैं, flagella present, non motile भी रह सकते हैं, हम पढ़ आ चुके हैं सब। gametes called plasmogamy, fusion of two nuclei called karyogamy, meiosis in zygote resulting in haploid spores, right? When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together। यहाँ पर जो हम फर्स्ट पिक्चर में देखे थे वहाँ पर आई वाज सेइंग कि hyphae भी sometimes hyphae you know they will what I'm saying, you know sometimes हमें mycelium में hyphae मिलेगा, right? So this is what they're saying, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse, right, to form dikaryotic hyphae, right? In some fungi the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cell, that is zygote। मतलब वहाँ पर क्या नहीं मिलेगा आपको, डाइकैरियन नहीं मिलेगा, and it is phycomycetes, right? However, in other fungi like ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage, that is dikaryon, that is n plus n है ये, that is two nuclei per cell, right, occurs in both asco and basidios। Such condition is called dikaryon and the phase is called dikaryotic phase of fungus, right? Later the parental nuclei fuse, यहाँ पर क्या होगा, parental nuclei fuse होगा and the cell become diploid, that is zygote। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, then वहाँ पर reduction division होगा, then it will form haploid spores, जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर होता था, जब मैंने भी पढ़ा था आई यूज टू गेट सो वरीड रीडिंग दिस पेपर अगेन एंड अगेन, बट आप अच्छे से पढ़ोगे देन इट विल बिकम यू नो a piece of cake for you people, right? Now see, so please have good understanding in each and every concept so that you people can have better results at the end। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन, दैट इज फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। हम अच्छे से नाम बार बार रिवाइज करके पढ़ आ चुके हैं इसके नो, वी हैव डन द एग्जांपल्स एज वेल। अब देखिए अब हम किस बेसिस पे फंगाई को क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है, सेप्टेट में या एसेप्टेट, स्पोर सेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल फूडिंग बॉडी है, इन बेसिस पर हम क्या करेंगे, फंगाई को क्लासीफाई करेंगे द बेसिस ऑफ फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, राइट। फाइको में हमारा ट्रिक क्या था, जल्दी से बताएं आप लोग। फाइको में ट्रिक वाज मार, राइट। इन एस्को द ट्रिक वाज जल्दी पे मिनिमम टीसी, ओके वेरी गुड। सी फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेट फंगाई, सिर्फ आपको एसेप्टेट फंगाई मिलेगा फाइकोमाइसिटीज, एंड डाइकैरियोटिक स्टेज एब्सेंट होगा फाइकोमाइसिटीज। ये चीज़ ये नो टू सेंटेंस आप लोग परफेक्टली याद रख लीजिए। फाइकोमाइसिटीज को हम आल्गल फंगाई भी बोलते हैं, राइट, अल्टरनेट नेम है, दैट इज गुड। बट देखिए फाइकोमाइसिटीज द ओनली ग्रुप वहाँ पर जहाँ पर आपको एसेप्टेट मिलेगा, बाकी तीन भी ग्रुप में आपको सेप्टेट ही मिलेगा फंगाई। एंड इन फाइकोमाइसिटीज ओनली आप डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं देखोगे, एस्को बेसिडियो में आप डाइकैरियोटिक स्टेज देखोगे, एंड ड्यूटेरो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, राइट। बट एब्सेंट पूछेगा तो आप फाइको बोलोगे, राइट। सो in phycomycetes aseptate fungi है and it is also algal fungi, and the trick is MAR, that is mar,
देखिए एस्कोमाइसिटीज सेप्टेट फंगाई, देन अदर 3 ऑल द ग्रुप्स आर सेप्टेट ओनली, एंड हम एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगाई भी बोलते हैं. पे मिनिमम TC इज द ट्रिक फॉर एस्कोमाइसिटीज. नाउ लेट्स सी बेसिडियोमाइसिटीज. यहाँ पर भी आप लोग देखोगे बेसिडियो एंड ड्यूटेरो दे बोथ आर सेप्टेट. देखिए बेसिडियो दैट इज इट इज सेप्टेट राइट, एंड इसको बेसिडियोमाइसिटीज को हम पफ बॉल, क्लब फंगाई एंड शेल्फ फंगाई भी बोलेंगे. ठीक है, पफ बॉल, क्लब फंगाई एंड शेल्फ फंगाई भी बोलेंगे. एंड व्हाट वाज द ट्रिक, दैट इज पाउट वाज द ट्रिक राइट. यस, पाउट वाज द ट्रिक, दैट इज पफ बॉल, पक्सीनिया, गैरिका सिस्टिलागो एंड टूल. ऐसा आपको याद होना चाहिए परफेक्टली. सो दिस इज अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज. इन ड्यूटेरोमाइसिटीज आपको फिर से सेप्टेट दिखेगा एंड इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलेंगे. क्यों इम्परफेक्ट फंगाई, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आपको दिख रहा है. हमने क्या कहा कि डाइकैरियन स्टेज एब्सेंट है फाइको में, एस्कोबेसिडियो में प्रेजेंट है, बट ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है, इसीलिए हम इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं. सैक फंगाई हम किसको बोले, एस्को को बोले राइट. एल्गल फंगाई क्योंकि एल्गल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फाइको में मिलेंगे, इसलिए हम उसको फाइको का एल्गल फंगाई बोले. बेसिडियोमाइसिटीज को हम पफ बॉल बोले, क्लब फंगाई या फिर शेल्फ फंगाई भी हमने कहा है राइट. Likewise, deuteromycetes को imperfect fungi भी कहा जाता है. And so, what is the trick? Very simple, right? See, here we go. What is the trick, please? Please, my FDs, answer it fastly. Yes, very good. That is cat, Coletotrichum, Alternaria, and Trichoderma, right? So, have you people done with this? Now, let's see based on sexual reproduction present है या absent. We have seen that there is only one group जहाँ पर sexual reproduction absent है and that is deuteromycetes. Okay, first देखिए आप लोग, अगर मैं आप लोगों को 3 situations दी, अगर फर्स्ट सिचुएशन है सेप्टेट, आप लोगों को सेप्टेट, आप लोगों को एक सेकेंड वेट फॉर वाइल, आई एम सॉरी. देखिए अगर आई हैव गिवन यू 3 सिचुएशन, फर्स्ट मैं आप लोगों से पूछूं सेप्टेट एंड ए सेप्टेट बेस पर, तो आप लोग बोलोगे सिर्फ फाइको है जिसमें ए सेप्टेट होगा, बाकी 3 ग्रुप है सेप्टेट राइट. सो सिंपल. एंड मैं आप लोगों को सेकंड सिचुएशन दूं सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल के बेस पर राइट. तो अब आप लोग बोलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज राइट. एंड अगर मैं आप लोगों को थर्ड सिचुएशन दूं डाइकैरियन, तो आप लोग बोलोगे कि डाइकैरियन इज एब्सेंट इन फाइकोमाइसिटीज एंड प्रेजेंट इन एस्को एंड बेसिडियो. ड्यूटेरोमाइसिटीज में नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट. सो दिस वाज द थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल. नाउ लेट्स सी. देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है 3 भी ग्रुप्स में, वी नो दैट. एब्सेंट है सिर्फ एक ग्रुप में, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज. एंड अगर हम सेप्टेट ए सेप्टेट की बात करें, बस एक ही ग्रुप है जो ए सेप्टेट है, वो है फाइकोमाइसिटीज. ठीक है. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड वो है सेप्टेट. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन, हमें पता है 3 भी ग्रुप में प्रेजेंट है, बट देखिए लोअर फंगाई जो ए सेप्टेट है दैट इज फाइकोमाइसिटीज, हायर फंगाई 2 है राइट. जो सेप्टेट है दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. ऐसा आपको क्या करना होगा, कोरिलेट करके पढ़ते जाना होगा. अब देखिए यहाँ पर हियर वी हैव द क्वेश्चन ए सेप्टेट hyphae present in. Hey, separate hyphae present in only one group I have said. What is that? Phycomycetes, right? What is the example of phycomycetes? Just recall right now. MAR, right? Mucor, albugo and rhizopus. So, what is the answer for this? Is separate hyphae present in albugo, right? ठीक है. Now, dikaryon एंड सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट इन. फर्स्ट डाइकैरियन आपको कहाँ पर नहीं मिलेगा, फाइको में नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दे. फाइको को ड्यूटेरो को नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर दे. एस्को एंड बेसिडियो में मिलेगा राइट. एस्को एंड बेसिडियो एंड दे बोथ आर सेपरेट एज वेल. तो अब हम देखेंगे एस्को एंड बेसिडियो के हिसाब से. फाइको albugo is phycomycetes, trichoderma is deuteromycetes, aspergillosis, yes aspergillosis. आप बोलोगे aspergillus कौन से ग्रुप का बिलोंग्ड है, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे. I will wait for this answer. And rhizopus is from which group? It is from phycomycetes, right? So the answer is aspergillus, क्योंकि यहाँ पर डाइकैरियन भी दिखेगा and it is a separate fungi. Now see, अब हम पढ़ने जा रहे हैं respective groups in detail. देखिए phycomycetes, right? Habitat, structure and nutrition. हमें पता है इन फाइकोमाइसिटीज डाइकैरियन एब्सेंट है एंड इट इज़ द ओनली एसेप्टेट एंड MAR इज द ट्रिक. ठीक है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यू शुड गेट परफेक्ट इन द क्लास इटसेल्फ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास राइट.
ठीक है। हैबिटेट देखिए, एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलेंगे फाइकोमाइसीटीज, डीकेइंग वुड, मॉइस्ट सॉइल, डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, एंड पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स लाइक मस्टर्ड प्लांट, राइट। एल्बिगो एग्जाम्पल है ना उसका, राइट, वेरी गुड। देखिए एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिल जाएंगे आपको डीकेइंग वुड्स पे, जो वुड डीके हो रहा हो, मॉइस्ट सॉइल पे मिलेंगे, डैम प्लेसेस, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पानी होना चाहिए, पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, राइट। एग्जांपल्स क्या है यहाँ पर, यस, एल्बिगो, एक्वेटिक हैबिटेट, डीकेइंग वुड, मॉइस्ट सॉइल, डैम प्लेसेस, पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, दैट इज मस्टर्ड, एंड देन दैट इज एल्बिगो, ओके, yes, very good. Structure, we know that it is aseptate and सिनोसाइटिक हाइफे है, राइट। आप लोग अब बोलोगे मुझे सिनोसाइटिक, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, अब आप लोग बोलोगे सिनोसाइटिक, व्हाट इज इट, सिनोसाइटिक, एसेप्टिक एंड सिनोसाइटिक हाइफे, in which class, that is in phycomycetes. Nutrition, saprophytic, parasitic, parasitic in albugo, we have read that mustard plant पे ये parasite था, and इसीलिए example albugo है, that is in parasitic nutrition, and saprophytic nutrition भी, because in decaying wood bulk है यहाँ पर दिया हुआ है, right। So nutrition, that is both saprophytic and parasitic. Habitat we have done, structure and nutrition. Now the next slide is here, reproduction, how it's gonna reproduce is the thing. देखिए vegetative reproduction is by fragmentation, all you people know that. Asexual reproduction, asexual spore form होंगे, and sexual reproduction can be isogamous भी हो सकता है, एनिसोगेमस भी हो सकता है, और oogamous भी हो सकता है, राइट। आइसोगेमस सेम, एनिसोगेमस डिफरेंट, एंड oogamous दैट इज सेक्सुअल। देखिए आइसोगेमस, एनिसोगेमस, oogamous, अब आप लोग मुझे डिटेली बोलोगे आइसोगेमस, एनिसोगेमस, oogamous क्या था, जो हम पिछले पढ़कर आ चुके हैं। Okay, now I'm expecting answers from you people, because if I have explained you many times in the previous lectures, now in 4th Y lecture I would expect answers from you, right? Now mycelium, if mycelium is haploid, now mycelium it will form fruiting bodies, and that too haploid, जो mycelium haploid है उसके ऊपर fruiting bodies germinate होगा, वो haploid है, right। नहीं देखिए यहाँ पर देखिए फ्रूटिंग बॉडी इट इज फॉर्मिंग स्पोरेंजिया, एक केस के अंदर स्पोर फॉर्म हो रहे, राइट। तो यहाँ पर ये एंडोस्पोर है या एक्सोस्पोर, डेफिनेटली इट इज एंडोस्पोर। माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहाँ पर स्पोरेंजिया केस में आपको स्पोर्स फॉर्म हो रहे, इन विच ग्रुप, दैट इज फाइकोमाइसीटीज। तो आपको क्या बोलोगे आप लोग, इन फाइकोमाइसीटीज एसेक्सुअल स्पोर डेवलप इनसाइड स्पोरेंजिया। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे डेवलप हुए थे, स्पोरेंजिया के अंदर हुए, राइट। अभी हम डायग्राम देख कर आ चुके हैं, नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोर्स का नाम क्या है, इट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। एंड एंडोजीनस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म इनसाइड अ केस, दैट इज स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म है, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग देम एंडोजीनस, एंड उस स्पोर्स का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स। केस था स्पोरेंजिया, सी हियर वी विल सी इट वंस अगेन, सी this is sporangiospores, right, this is sporangia, they are produced inside the sporangia, that is the reason they are endogenous in phycomycetes. Now sporangiospores can be motile, zoospores, and non-motile aplanospore, right. You people know this very purely and perfectly, that we have done in previous classes. Now see, mycelium, right, इट इज एसेप्टेड इन फाइकोमाइसीटीज। देन आपको क्या पर दिखेगा, ये सेक्सुअल स्टेजेस पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम एसेक्सुअल पढ़ा चुके हैं। अब हम पता है कि फर्स्ट प्लास्मोगेमी, डाई कैरियोगेमी एंड मियोसिस, दीज आर द सेक्सुअल स्टेप्स, राइट। तो हम सेक्सुअल साइकिल पढ़ रहे हैं। एसेप्टेड माइसीलियम इन फाइकोमाइसीटीज, देन यहाँ पर आपको गैमीट, इट इज़ हैप्लॉइड। देन क्या आपको यहाँ पर प्लास्मोगेमी तो होगी फ्यूजन, लेकिन यहाँ पर क्या आपको डाइकैरियन मिलेगा, नो, नॉट विजिबल इन फाइकोमाइसीटीज। तो यहाँ पर डायरेक्टली जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट तो यहाँ पर देखिए जाइगोस्पोर, यहाँ पर एक टफ एंड शील टाइप फॉर्म हो जाएगा, दैट इज जाइगोस्पोर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, किसमें, फाइकोमाइसीटीज में। देन यहाँ पर इसका मियोसिस होगा, देन इसके बाद एंडोजीनसली स्पोर्स फॉर्म होंगे, then here we get spore, then spores germinate हो गए to form mycelium. So this was about phycomycetes. This is a sexual cycle, right? But यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि dikaryon was not visible in phycomycetes, and यहाँ पर zygospore, that is zygospore is nothing but यहाँ पर एक toughened sheet form हो जाएगी अराउंड zygote के, इसको हम zygospore बोल देंगे। देन उसका रिडक्शन डिवीजन मियोसिस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक्सुअल स्पोर भी एंडोजीनस है, देन दे फॉर्म स्पोर्स and through germination they form mycelium. So this was about phycomycetes, right. Now see, phycomycetes, members of phycomycetes are found in aquatic habitats, on decaying wood, that is why saprophytic, in moist and damp places, or as obligate parasites on plants like albugo, right.
The mycelium is aseptate, very good, and cenocytic. Asexual reproduction takes place by zoospore motile or aplanospore non-motile. These spores, asexual, are endogenously, asexual spores are endogenously produced inside sporangium. Zygospores, right, are formed by fusion of two gametes, very good. These gametes are similar in morphology. Isogamous can be similar, that is isogamous, or dissimilar, anisogamous or oogamous. Some common examples are muco, rhizopus, the bread mentioned earlier, then albugo, that is parasitic fungi on mustard plant. So we have done Phycomycetes, and the next group is here, that is Ascomycetes. Habitat growing on decaying substance, grow on dung, corporophyllus. dung पे भी grow होगा, that is corporophyllus, and decaying substance पे भी आपको मिल जाएगा Ascomycetes. Structure है septate, yes we know that all the three other are septate, only Phycomycetes is aseptate and branched है यहाँ पर. Nutrition देखिए, parasitic है, saprophytic and symbiotic, आपको तीन भी मिलेंगे Ascomycetes में. Now the next thing is here, देखिए reproduction. Reproduction vegetatively by fragmentation, fusion and budding. Fragmentation, fusion and budding, this is the reproduction by vegetatively. Now let's see asexual reproduction in Phycomycetes, then we will go for sexual reproduction, right. Asexual reproduction, mycelium है, right. Then here mycelium, the mycelium के ऊपर आपको fruiting body दिख रहा है, fruiting body पर आपको दिख रहा है spores form में, and spores का name है conidiospores, right. But they are formed exogenously. क्यों exogenously? Because they are not formed inside any case, right. So they are formed exogenously. But what you have to mention here is, what you have to note here is, spores का name तो है conidiospores. They are exogenous because they are without case, right. Now the fruiting body, it is conidiophore, and it is also haploid because the mycelium is haploid, right. So the fruiting body का name क्या है? Conidiophore, and the spores are conidiospores, very good, and this were exogenous. But हम क्या पढ़े थे conversely in Phycomycetes, they were formed inside sporangia, asexual spores, and they were sporangiospores and they were endogenous. But हम यहाँ पर आस्को में क्या पढ़ चुके कि fruiting body is conidiophore and spores are conidiospores and they are exogenous, right. देखिए, they are non-motile aplanospores, non-motile and aplanospores है, right. non-motile aplano, right. So in Ascomycetes देखिए आप लोग asexual पढ़े हम लोग first. Asexual reproduction occurs with the help of conidia, yes or no. Conidiospores, haploid है वो, exogenously produced, non-motile है, that is aplanospore, develop on conidiophore. Conidiophore is fruiting body. Now the sexual reproduction of Ascomycetes is here. देखिए, mycelium, it will form gamete. Now we have seen that dikaryon not be visible in Phyco, but यहाँ पर visible होगा क्योंकि Asco and Basidium में visible होता है. That is यहाँ पर first plasmogamy होगी and dikaryon form होगा, and यहाँ पर karyogamy होगी, then zygote form होगा. Then zygote की यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैंने आपको two fates बताई थी, meiosis and spore will form. Other than that mitosis होगी, 2n है, राइट. माइटोसिस होगी, देन माइसीलियम फॉर्म हो जाएगा. माइसीलियम यहाँ पर क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी का नेम क्या है, एस्कोकार्प, जिसमें एस्कस फॉर्म होंगे, राइट. देखिए ये है एस्कस, ये है एस्कस, ये है एस्कस, ये थे हमारे फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, ये थे हमारे एस्कस. एस्कस में आपको दिखेंगे एस्कोस्पोर्स. देन ये स्पोर्स फिर से माइसीलियम फॉर्म कर देंगे. सो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट स्लाइड क्या था कि यहाँ पर फेट क्या हो गया, माइटोसिस से माइसीलियम, देन फ्रूटिंग बॉडी से आपको स्पोर बने, दैट इज दीस आर एस्कोस्पोर्स, एंड दे आर फॉर्म एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली. जल्दी से बताएं. यस, दे आर फॉर्म एंडोजीनसली. नाउ लेट्स सी हियर in Ascomycetes septate hyphae, yes septate hyphae or not, yes aseptate से फाइको में दिखेगा आपको, एंड डाइकैरियन एब्सेंट भी फाइको में है. ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी बोला जाता. एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर, हमें एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर मिले थे फाइकोमाइसिटीज में, बट यहाँ पर देखिए एक्सोजीनसली एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म इन एस्कोमाइसिटीज. कोनिडिया है उसका नेम, दैट इज कोनिडियोफोर, कोनिडियोस्पोर्स, बट दे आर फॉर्म इन फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या था, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का, दैट इज कोनिडियोफोर, एंड द स्पोर्स आर कोनिडियोस्पोर्स, राइट. अब देखिए सेक्सुअल स्पोर्स में हमें क्या दिखा, स्पोर्स वर एंडोजीनसली फॉर्म, राइट, inside ascus on ascocarp. ascocarp क्या था, फ्रूटिंग बॉडी का नेम,
एंड एस्कोस्पोर्स जो सेक्शुअल स्पोर्स है दे वर फॉर्म एंडोजीनसली. न्यूरोस्पोरा एंड मॉरल्स जो हम पढ़े थे एग्जाम्पल्स में, न्यूरोस्पोरा देखिए यूज होगा बायोकेमिकल में, एंड मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, दे बोथ आर एडिबल. सो विद दिस वी हैव एंड लेट्स एंड दिस ऑफ टुडेज क्लास. आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, पहले एग्जाम्पल्स देन ट्रिक्स. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा आपको बर्डन लगे इतने एग्जाम्पल से, प्लीज़ आप लोग वीडियो सी मोर देन एटलीस्ट वन टाइम सो दैट इट विल डाइजेस्ट यू पीपल ईजिली. सो विद दिस प्लीज़ आप लोग अच्छे से डोंट रश फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस. फर्स्ट आप लोग इसको ही परफेक्ट करें. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एग्जाम्पल्स वाला पार्ट, क्योंकि एग्जाम्पल वाले पार्ट से ही आता है वॉट एवर द थियरीज, बट कोरिलेशन आपको एग्जाम्पल से ही होगा. सो प्लीज़ आप एग्जाम्पल परफेक्टली करें, देन हम नोट्स से करेंगे परफेक्ट हमारा एनसीईआरटी से, राइट. सो विद दिस लेट्स जस्ट एंड टुडेज क्लास. ओके, yes which doctors, why we are here? Yes, we are here and we are working to achieve the dream. Till then, take care of yourself and your family. Goodbye.